Unacademy. Hi Deependra, congratulations on your Thank you. success in Odisha Judiciary. Thank you so much, sir. It's means dreams comes true. So more than clearing judiciary, it's means having a conversation with you and sharing screen with you. It's means I'm very much delighted, sir. You have the proud privilege that you belong to the first batch of which I took in on Unacademy, and you have cracked judiciary right when we started from right from. I got, sir, 1 year extension, and iPhone also I got, sir, one. Actually, you got an iPhone also. Yes, sir. In the So first that- So that means our scholarship tests, which Unacademy is holding, is actually finding out the right people who are going to become judges. actually, sir, right, sir. So basically, the way we teach you, मेरी ये कोशिश होती है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो हमने क्लास में ना किया. Sure, sir. And I'm sure all the questions which came in exams had been discussed in class. Yes, sir. In the mains examination, when I was giving the exam, when I opened the paper, na, I was like, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सर ने नहीं पढ़ाया. And so मैं to the point लिख के आया, मतलब जितना लिखना था उतना लिख के आया, मतलब आपने जो बताया था जैसे to the point में लिख के आया, और बढ़िया क्वेश्चन थे उड़ीसा में इस बार. The questions were quite good. Means 5 mark questions were there, and to the points मैंने लिखा था. Do you think कि अब जैसे हम Unacademy में पढ़ा रहे हैं, जैसे में comprehensive batch हम लेते हैं, do you think that is more than sufficient to crack any judicial examination in the country? I think more than sufficient, sir. Even means I was thinking that I think the physical class are a bit better because you are not having a openly conversation with your teachers or means your mentor. But later on, I feel that we are getting a rhythm. Means you are getting more time, you are getting more space, and further you will means the way you made the comprehensive batch, it will run smooth, and will ultimately means give the student a depth knowledge of the subject, sir. So it was very helpful, sir. Means the way you taught the major subjects like the CRPC, CPC, and the way Sital ma'am taught, Amrit madam taught, and the Priya madam taught. Na, I think this is the best faculty I ever seen in the entire India, I must say. I think means I'm admitting it because the depth they are going. Na, initially you feel that there is no need to go in such depth. But ultimately you will see the kind of the questions that are coming in the examinations. You need to go in that depth, otherwise you will suffer ultimately. How did you make your notes? सर आई थिंक सर मतलब मैं ज़्यादातर क्लास नोट्स के ऊपर रिलाई करता था सर. मतलब मुझे मतलब आई एम द काइंड ऑफ द पर्सन हु इज नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग नोट. आई एम सॉरी सर, बट मतलब मेरे से नोट्स नहीं बनते सर. मैंने नहीं बनाया सर. मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं नोट्स नहीं बना सकता, बट क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से बनाता हूँ. इट्स लाइक नोट्स. क्लास नोट्स में प्रॉपर्ली बनाता हूँ, तो उसमें से मेरे को मजा आता है सर. क्लास नोट्स से करने में अच्छा लगता है. अच्छा, what is your family background, beta? Do you belong to a family of lawyers, or there's nobody in law? I'm the first generation lawyer, sir. Sir, when sir I was born in sir means village Dholi, Tong district. I think you were posted there, sir, in the Rajasthan. Tong. Yes, sir. I was born. Yes, sir. I was born in the Tong district. Yes, sir. In the 1997, you were there, I think. Yes. How do you know that? You have to give any competitive exam. I can only help you jump the wall. Yes, sir. Wall तो आपको ही jump करनी है. मैं तो आपको push कर सकता हूँ. नहीं सर, आपने डायमंड्स को अच्छे से पॉलिश किया सर. You said you told that we are the uncut diamonds and you polished it very well, sir. Because मैं तो अभी भी आपकी क्लास लेता हूँ सर. मतलब मैंने कहा सर हो गया तो ऐसा नहीं है, तो अभी भी CPC का एग्जीक्यूशन दोबारा कर रहा हूँ because I want to master it, sir. आपका what will be your advice and suggestions to all the online students? How should they prepare for prelims? How should they prepare for mains? How should they prepare for interview? Sir, I think for the prelims, the means as usual, barracks are must. And if you see the questions of especially particularly the my state's questions, and they are directly from the barracks, sir. Means there is no hurdles in clearing the barrack. Means the prelims exams if you go through the barracks properly. And for the mains, I must say your notes are more than sufficient. There is no need for any books, reference, nothing, sir. Means your notes are too bulky already, na? So it's too difficult to carry another book, na? Wonderful. That means right after LLB, you have immediately appeared, and there you are. So I'm at least satisfied and very, I'm happy that at least, our training
for judicial services is now proving effective also on online students. And I definitely must congratulate Unacademy for holding a very, very comprehensive way. And, because now a lot of new things are being added day by day. Hi, Deependra. Congratulations on your Thank you. success in Odisha Judiciary. Thank you so much, sir. It's means dream comes true. So more than clearing judiciary, it's means having a conversation with you and sharing screen with you. It's means I'm very much delighted, sir. Thank you, Beta. Thank you. In fact, you have the proud privilege that you belong to the first batch of which I took in on an academy, and Yes, you have cracked judiciary right from the beginning. yes, Okay, sir. what has been your experience in this journey through with an academy throughout with me? Sir, one interesting na, I joined in April, May. Means you started batch from the June 15th, sir. But I Correct. joined before and I was attending your lectures. And I think you put some questions in the Unacademy Judicial Scholarship Test. And I was the only plus student who secured a rank in the first Unacademy Judicial Scholarship Test. I secured rank 3 in that test. And I know most of the questions you were taught in the means the special classes, sir. And Okay, that's I wonderful. I got sir 1 year extension and iPhone also I got sir one. Actually, you got an iPhone also. Yes, sir. In the so first that, so that means our scholarship tests, which an academy is holding, is actually finding out the right people who are going to become judges. actually, sir, right, sir. Acha, how was your journey? I mean, what did you do? I mean, you were on a probably we are face to face for the first time, because in online platform you don't see anybody. You can see me, Yes, but I can't see all my students. yes, sir. So, how did you move about and how did you get this success? In fact, I'm very proud because I have a lot of students as judicial officers in Punjab, Haryana, Himachal, Delhi, even Rajasthan. But I did not have students as my students as judges towards East India. And I think you have that given me that proud privilege of being my first student coming up from eastern part of India to become a judge. It always motivates me also. So how did you move about in your journey to become a judge when you joined our Unacademy courses? तो आप क्या करते थे पहले उसमें नोट्स कैसे बनाते थे वगैरह लेट अस ऑल नो अबाउट इट. Sir, I think I did some mistakes and I regret it on the later part. First of all, sir, I think the way you taught na, means the details in which you taught, it was quite amazing, sir. I still remember one thing, the manner in which you taught the conspiracy, the criminal conspiracy, chapter 5A of the Indian Penal Code. I think what it is, na, means nobody teaches in such a way. Na? So it was, I was means, taken aback that how means which depth and details you taught us, na? And means sir, mostly I rely on your notes, sir, because one thing I lack is I failed to make the skeleton notes, and believe me, sir, it was terrible in the end because I did not get the times to revise all the things, and ultimately, this affect my ranking. I think I'm really sorry, sir, for that. But नहीं नहीं. ultimately, sir, your notes, I must say, na, means your class notes, and the way Seetal ma'am taught, na, which makes me fall in love with the TPA, na, and Okay. and sorry, with due respect to you, sir, we have an option that either you choose the family law or the contract law, and but I choose the contract over family law because earlier I was means afraid of the contract law, but then the Priya madam came and how smoothly she taught ना contract law. I was मतलब सर मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये contract law मतलब जब मुझे एक डर लगता था इससे ना मतलब इतना स्मूथ हो गया सर मैंने कहा मैं contract ही लूंगा मैं family law के साथ नहीं जा रहा and I think that contracts means मतलब मुझे आगे लेके गया ये contract law ही आगे लेके गया है सर मुझे. ओके, एक्चुअली क्या होता है कि फैमिली लॉ इज अ वेरी टेक्निकल लॉ, हिंदू लॉ, वेरी डीप लॉ, हिंदू Yes sir. सक्सेशन एक्ट. इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, while teaching you Hindu succession law, only on the classical Hindu law there were about 80 lectures. Yes sir. Yes. हिंदू सक्सेशन लॉ ही मेरा 80 लेक्चर के बाद शुरू होता है. सर हम यही तो बोलते थे कि सर सब शुरू कब करेंगे मतलब
मतलब वो होगा कब शुरू, क्या चल रहा है ये तब से, मतलब सर वो डेप्थ Right. में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। But now do you understand why I have to go into depths and एक्चुअली how सर, it एक्चुअली सर। every question is covered? So basically the way we teach you, मेरी ये कोशिश होती है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो हमने क्लास में ना किया हो. श्योर सर। And I'm sure all the questions which came in exams had been discussed in class. Yes, sir. In the mains examination, when I was giving the exam, when I opened the paper, na, I was like, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सर ने नहीं पढ़ाया है। एंड Okay. सो मैं टू द पॉइंट लिख के आया, मतलब जितना लिखना था उतना लिख के आया, मतलब आपने जो बताया था जैसे टू द पॉइंट में Yeah. लिख के आया, और बढ़िया क्वेश्चन थे उड़ीसा में इस बार। द क्वेश्चंस वर क्वाइट गुड, मींस 5 मार्क क्वेश्चंस वर देयर, एंड टू द पॉइंट्स मैंने लिखा सर उसमें। Okay. और सर Do you? मुझे ये लगा ना सर, मतलब एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो कि मतलब आपके मतलब बाहर चला गया हो, आपने बोला हो वो ना आया हो। इट वाज मींस 100% एक्यूरेसी वाज देयर सर। ओके. डू यू थिंक कि अब जैसे हम अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं कॉम्प्रिहेंसिव बैच हम लेते हैं, डू यू थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन इन द कंट्री? I think more than sufficient, sir. Even means I was thinking that I think the physical class are a bit better because you are not having a conversations, openly conversation with your teachers or means your mentor. But later on, I feel that we are getting a rhythm. Means you are getting more times, you are getting more space, and further you will means the way you made the comprehensive page, it will run smooth, and will ultimately means give the student a depth knowledge of the subject, sir. So it was very helpful, sir. Means बेटा एक्चुअली मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बैच को जो बनाया था, इट वाज yes, sir. आफ्टर अ लॉट ऑफ प्लानिंग Yes, that sir. this set of subjects will start in June, July, and they will finish by say February, and then the next set of subjects will start in February and end in June, July. तो उसके अंदर तकरीबन आई थिंक अबाउट 35-37 सब्जेक्ट्स हमने कवर किए. Yes, sir. So which gives a very wide panorama to all my students all over India. So that advantage is there that we actually prepare you for all examinations all over India. सर मीन्स दिसंबर में जब नोटिफिकेशन आया था Hmm. उड़ीसा जुडिशियल सर्विस का, तब हमारा मतलब सोगा वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था पार्टनरशिप ना, तो आई वाज वेरी अफ्रेड कि कैसे होगा, हाउ विल आई मैनेज ना ऑल दीज थिंग्स की पढ़ना पड़ेगा। बट वो पता ही नहीं चला कि 2-2.5 महीने में सब कंप्लीट भी हो गया, मतलब Yes. स्मूथली सब अपने आप होता गया, मतलब वो होता है सर, एक मतलब स्मूथली चलता है ना तो चलता जाता है सर अपने आप। Actually, you know what, दीपेंद्र, हमने जब ये प्लान किया था सारा, तो जब मेरा ऑफलाइन चलता था अपनी एकेडमी में, जी तो हमने यही सिस्टम बनाया हुआ था दैट कोई भी सब्जेक्ट का एक भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए. जी एंड सर। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हम अगर 35, 36, 37 लॉ कराते हैं, every word of every law is taught in detail, and जी सर। every critical analysis, including judgments, latest judgments, everything was there. Yes, sir. I absolutely agree, sir. Means the way you taught the major subjects like the CRPC, CPC, and the way Sital ma'am taught, Amrit madam taught, and the Priya madam taught, na, I think this is the best faculty I ever seen in the entire India, I must say. I Right. think means I'm admitting it because the depth they are going, na, initially you feel that there is no need to go in such depth. But ultimately, you will see the kind of the questions that are coming in the examinations. You need to go in that depth, otherwise you will suffer ultimately. So initially it will like कि क्यों पढ़ा रहे हैं, but ultimately it will be beneficial for you. Actually, beta, you will be surprised that the same thing has been told to me by all मेरे 400 से ऊपर जज बन चुके हैं अभी तक स्टूडेंट्स. Yes, और sir. सारे मुझे यही कहते हैं कि सर पहले हम सोचते थे कि why does sir go into so much of details? Yes, Are sir. so much details needed? But when we appeared in the exams, we said, thank God we had gone into details. Otherwise, we could never have cracked it. Sure, sir. Okay. How did you make your notes? सर आई थिंक सर मतलब मैं ज्यादातर क्लास नोट्स के ऊपर रिलाई करता था सर, मतलब मुझे मतलब आई एम द काइंड ऑफ द पर्सन हु इज नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग नोट, आई एम सॉरी सर, बट मतलब मेरे से नोट्स नहीं बनते सर, मैंने नहीं बनाया सर, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं नोट्स नहीं बना सकता, बट क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से बनाता हूँ, इट्स लाइक नोट्स, क्लास नोट्स में प्रॉपरली बनाता हूँ, तो उसमें से मेरे को मजा आता है सर, क्लास नोट्स से करने में अच्छा लगता है मेरे को। Do you remember I used to, every topic के साथ I used to give you questions. यस कि सर। इस
टॉपिक पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल सर, तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल सर, think that once you have attended, suppose, our Unacademy course, then you are comprehensively prepared. बिल्कुल सर, नो डाउट, नॉट इन आयोटा ऑफ डाउट सर इन दैट सर। Okay, and do you need any books to refer to even? The notes नहीं काफी सर, हैं. सर आप इतना पढ़ाते हैं, फिर बुक्स की क्या जरूरत पड़ती है सर? फिर बुक्स खोलना सर बेईमानी हो जाएगी एकदम से। अच्छा, how was the interview? Interview was good, sir. Sir, as you told, na, the interview was very friendly. Even they assist me. I was stuck somewhere, Hmm. and they means they cooperate very much. One of the interview panel means our the OPSC chairman. He's also retired IPS sir, Satyajit Mahanti sir, was also there, and they all are very cooperative, sir. Means I stuck somewhere, they helped me, and I think it was 6 minute, 6 or 7 minute interview was there. But the thing is that sir, they asked me syllabus, the questions out of the syllabus mostly. From Ah, like they asked me from the JJ Act. I told the JJ Act means JJ Act was not in our syllabus. yes. So I answered some of the questions because I attended special lectures you have given. And sir, believe me, sir, those special lectures are kind of the boost things that will give boost on a different side, sir. And That is, the yeah. yeah, Please. DB Act was also there. And they asked me question on the free buys, sir. Means the government free buys policy, and Hmm. I answered it properly. They were means satisfied with my answer, and Hmm. I think, sir, the newspaper things means I read a newspaper means daily newspaper reading I do. That's helped me means quite. That was quite helpful in the interview, I say, sir, because there were few topics they asked me directly from the current affairs, sir. Usually the students before me in the interview they were not asked the questions about means the means current affairs, but I was asked questions of the current affairs, sir. So sir, Acha, as you told, sir, you should read means you should read the newspaper, and sir, I was stick to that. Means I'm fond of good. reading newspaper, sir. It's an I'm very habit, happy. sir. Yeah, I'm very happy that whatever I told you in class, you should do on an everyday basis. You followed that. And Yes, sir. all students who follow my advice, they always succeed. Because I have seen this out of experience. I say all these things. Like, if you remember, I used to tell you that in your interview, there is no syllabus. Yes, sir. Yes, sir. You must know every law. Yes, sir. Every That law. is the Okay, reason sir. why, if you remember, I used to tell you in class that I am going to start in special laws, JJ Act, DV Yes, sir. Act, Intellectual Property Act. All these laws, you must know at least something about it. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Or if they ask you, you should not be at sea, कि मुझे आता यस ही सर। नहीं है. नहीं तो फिर सर It's a, बगले झाँकते रहेंगे इधर-उधर कि क्या करें? Acha. Acha, what is your family background, beta? Do you belong to a family of lawyers, or there's nobody in law? I'm the first generation lawyer, sir. Sir, Oh, when sir, I was born in sir means village Dholi, Tonk district. I think you were posted there, sir, in the Rajasthan. Tonk, Tonk, Tonk yes, sir. I mein. was born. Yes, sir. I was born in the Tonk district. Yes, sir. In the 1997, you were there, I think. Yes, how do you Yeah. know that? Yes, sir. You told once. You told once in the light classes. You were once posted in the Tonk district. In sir, Yes. my maternal uncle house, and I was born and brought up till there sixth class. Then I shifted to the Odisha, sir, after in 2008, sir. Acha, oh my God, Acha, you were there where I was SSP once. Yes, sir. Yes, sir. I was in the Tonk district, sir. Oh, that's wonderful. That's wonderful. Acha, Yes. uske baad then, what did you do in Odisha? सर उड़ीसा में सर मैं जब सिक्स क्लास में आया तो थ्री थ्री इयर्स मैंने मतलब 6 से 8 तक मैंने मतलब यहाँ पे मतलब पढ़ाई की। उसके बाद में सर मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया सर। तो सर Okay. 9 to 12 आई वाज इन द नवोदय विद्यालय सर, एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट phase of my life, sir, I must say. Yeah, it's a And format. after, yes, sir, then I completed my graduation in the means science streams, that is the zoology. But sir, I was fond of law, so that's why I means took admissions in the law college. And after the journey starts, and finally I means I got a mentor and the guider like you that helped me to reach this stage. And so I can't express in the words, sir, means how am I feeling today. Means I owe my success to you, sir, totally. No, beta, I think see, I always say, whenever you have to give any competitive exam, I can only help you jump the wall.
यस सर। वॉल तो आपको ही जंप करनी है, मैं तो यस। आपको पुश कर सकता हूँ। नहीं सर, अब आपने मैं डायमंड्स को अच्छे से पॉलिश किया है सर। यू सेड, यू टोल्ड दैट वी आर द अनकट डायमंड्स एंड यू पॉलिश्ड इट वेरी वेल सर। बिकॉज़ मैं तो अभी भी आपकी क्लास लेता हूँ सर, मतलब मैंने कहा सर हो गया अच्छा, तो ऐसा नहीं है, तो अभी भी सीपीसी का एग्जीक्यूशन दोबारा कर रहा हूँ बिकॉज़ आई वांट टू मास्टर इट सर। yes, exactly. Because now as a judge, when you join as a judge, तो people go with the presumption कि आप तो masters of law हो। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अब चाहे आप नए जज हो, चाहे पुराने जज हो, सब तो यस ये सर, मान के चलते हैं कि जज साहब को तो बहुत अच्छा लॉ आता है, बेस्ट आता है। यस So सर, that is why you must always, even after you become a judge, you must keep on polishing your law so बिल्कुल that सर। you can give the best possible judgments, and यस they're सर। not overruled by the higher courts, later on. यस सर, आप बहुत बोलते हैं सर। मैं सब याद रखता हूँ सर, मैं डायरी में नोट करके रखता हूँ। अच्छा, अच्छा, how did you prepare your language? सर लैंग्वेज यहाँ का मतलब उड़ीसा का रहता है, तो उसमें एक ट्रांसलेशन रिट्रांसलेशन रहता है, तो वो मैंने न्यूज़पेपर से ही किया है। न्यूज़पेपर रीडिंग करके खुद ट्रांसलेशन रिट्रांसलेशन। बाकी मैम ने भी हेल्प की है उसमें, मतलब ग्रामर वगैरह में। तो ग्रामर यहाँ पे नहीं आता उड़ीसा में ज़्यादा। इट्स Hmm. बेसिकली द मीन्स द एशे पार्ट एंड द प्रेसी राइटिंग एंड द कॉम्प्रहेंशन। And sir, Okay. I think the newspaper readings help me. This is one of the means the important factor. You told that newspaper reading must be there, and it Yeah. helped me a lot, sir. Also in the language part, sir. I always say that is why I say every student who wants to compete in any examination, he must be regular in newspapers. He must know the latest current events, and he must concentrate on the editorial page. Yes, sir. बिकॉज़ एडिटोरियल पेज पे आपकी इतनी सारी अच्छी लैंग्वेज आती है, एक तो एक आइडियाज़ आते हैं, उससे ऐसे भी तैयार हो जाता है आपका। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं Yes, sir. आपको। ओके, एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश? सर इंग्लिश का मैंने मैम की क्लास वगैरह की थी, तो उससे मुझे मतलब ग्रामर वगैरह का हो गया। और बाकी सर मतलब एशे वगैरह भी मैम ने कुछ टॉपिक्स दिए थे, वो भी क्वाइट हेल्पफुल रहे। बट फॉर्चुनेटली सर कैपिटल पनिशमेंट आया था एक ऐसे में, तो अच्छा, मतलब इट्स वन ऑफ द इजी थिंग। एंड मतलब सर 150 वर्ड्स होते हैं यहाँ पे उड़ीसा में लिखने के लिए, ओनली 150 वर्ड्स। तो यू हैव टू मेक इट मींस प्रिसाइज, टू प्रिसाइज ना। तो मैंने आपने पढ़ाया हुआ था, तो मैंने मतलब वही लिखा है मतलब उसमें। तो मतलब in the English language ये also means I took the help of the IPC sir. या यू रिमेंबर वी वर डूइंग कैपिटल पनिशमेंट, आई थिंक इन सीआरपीसी में हमने किया था। Yes sir, yes जब sir. हमने प्रोबेबली डेथ पेनल्टी पे मैंने लेक्चर लिया था, प्रोबेबली व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 31 Yes कंसेक्यूटिव sir, लॉ पे जब हम करे, तब मैंने शायद डेथ पेनल्टी के बारे में पूरा लॉ बताया था विद yes ऑल sir. द जजमेंट्स। वही मैं कहता हूँ, इसी पता नहीं कौन सी नॉलेज कहाँ काम आती है। आप बिल्कुल सोचो सर, कि लॉ की नॉलेज सीआरपीसी में हम पढ़ रहे हैं और वो ऐसे में काम आ रही है इंग्लिश कैसे की। हमारे बिल्कुल सर। That is why it's a very comprehensive hard work which is needed, because you Yes don't sir, know कंपटीशन में कौन सी नॉलेज कहाँ काम आए, ये जरूरी हो जाता है, बहुत बार होता है। yes Okay, sir, so now you will be going for training, of course, and yes sir, then of course, you'll be starting with your next phase of training and then postings may. Okay, one thing more, there are a lot of students who are following online lectures now. Now, yes sir, Unacademy has become almost number one as far as yes sir, online is concerned. yes Uh, sir, what are your I will say suggestions and advice to the online students? वो कैसे तैयारी करें? क्योंकि कई बार क्या होता है ऑनलाइन में, एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि many times you lose interest and sometimes you lose your motivation. ऑफलाइन में क्या होता है, क्योंकि रोज मिल रहे होते हो तो वो मोटिवेशन कंटिन्यूअस होता है। ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा एक जो डर होता है, वो ये है कि यू टेंड टू लूज मोटिवेशन एंड कनेक्शन। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। what do you think, what should be the right course which should be followed by online, because you are a typical online yes sir, success story. yes sir, So fortunately I've been with Unacademy now for 1.5 years, and I yes see sir, that they leave no stone unturned. yes अब sir, तो बहुत सारे टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, मेंस yes के, sir, बहुत सारा। नेचुरली टाइम के साथ साथ हर आदमी नई बिल्कुल नई सर, चीजें यूज करता है। एंड आई एम वेरी वेरी प्लीज टू से दैट अनअकैडमी इज probably one of the best academies online in India, क्योंकि आज जिस, तो आपका what will be your advice and suggestions to all the online students? How should they prepare for prelims?
how should they prepare for mains, and how should they prepare for interview? Sir, I think for the prelims, the means as usual, barracks are must. And if you see the questions of especially the particularly the my state's questions, and they are directly from the barracks, sir. Means there is no hurdles in clearing the barrack means the prelims exams if you go through the barracks properly. And then for the mains, I must say your notes are more than sufficient. There is no need for any books reference, nothing, sir. Means your notes are too bulky already, na. So it's too difficult to carry another book, na. So notes are sufficient. And sir, interview I must say means in the means the classes आप बोलते रहते हो कि बेटा नोट कर लो, ये इंटरव्यू में आएगा, ये इंटरव्यू में आएगा, ये इंटरव्यू में आएगा. तो मैं नोट्स करता रहता हूँ कि हाँ सर आईक्यू लगा के, हाँ आईक्यू इंटरव्यू सर बोल रहे हैं कि ये इंटरव्यू आ सकता है, ये इंटरव्यू आ सकता है. तो आप साथ साथ डिक्टेट करते रहता है कि ये भी मेंस क्वेश्चन आएगा, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा. तो सर उसकी प्रिपरेशन वो अपने आप ही हो जाती है. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई सेपरेट जाके प्रिपरेशन करनी पड़ती है. हाँ ये हो सकता है कि सर आप एक मॉक इंटरव्यू दे सकते हो बाहर कहीं भी, कि आप किसी के साथ एक मॉक इंटरव्यू देने से क्या एक अच्छा लगता है, वो प्रिपरेशन हो जाती है आपकी. बट आई थिंक प्रिपरेशन सर मतलब जितनी मतलब मैंने की है मोर देन सफिशिएंट, मतलब जिस हिसाब से आपने कराया है. एंड सर मोटिवेशन की जहां बात है तो सर अपना एक एम रहता है, तो वो एम ही आपको मोटिवेशन देता है सर. मोटिवेशन मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई आपको दे रहा, आप ले रहे हो, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है. ये आपका एम ही आपको देता है कि मेरा एम है, मेरे को वहां पे पहुंचना है, दैट्स इट. उससे बड़ा कुछ नहीं होता है. एंड सर ऑनलाइन इज बेस्ट थिंग ना सर, आप अपने कन्वीनियंस पे देख रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि आज एक लेक्चर मिस हो गया देन यू लॉस्ट ए लॉट थिंग्स. Hmm. ऑफलाइन में वही प्रॉब्लम होती है. ऑनलाइन में आज कुछ इशू हो गया तो अनिल सर कहीं नहीं गए, अनिल सर इज देयर ना, आपने लैपटॉप खोला, अनिल सर इज देयर फॉर यू ना. तो दैट्स मींस ह्यूज बेनिफिट आई मस्ट से ऑफ द ऑनलाइन. And Correct. sir, means I think the means I think 4 lectures are per day you are conducting, sir. Means in our batch there were 4 lectures. I think nowadays you are conducting 3 lectures. I don't know. True. But 4 lectures I think you can easily cover. But there was a schedule, sir. Like you said ना, 9 बजे से start हो जाते हैं, 5 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा. So वो बैठने की आदत हो गई सर, वो आप पहले ही बिठा रहे हैं ऑफिस में जाने से पहले ही कि आपको 9 से 5 तक यही बैठना, मैं बिठा रहा हूँ आपको. So that's not a good thing, sir. कभी कभी फ्रस्ट्रेशन लग जाता है सर कि मतलब बैठे बैठे बोर हो गए, क्या है वह है. बट थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट ब्रेक ब्रेक आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो उसमें आपने 5-10 इधर उधर घूम लिए, कर लिए, देन अगेन क्लास आके बैठ गया. तो वो बढ़िया चीज है सर ऑनलाइन में. आई थिंक इट्स गुड नाउअडेज सर. Yes. Acha, how did you prepare your notes? You know, lot of students, have this problem कि सर नोट्स बनाए. चलो मैं तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक एक वर्ड पे एक एक लेक्चर कई बार दे देता हूँ. तो वो कहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, पहला पॉइंट. दूसरा, व्हाट मोस्टली एवरीबडी टेल्स मी, सर उसको याद कैसे रखें. हाउ डिड यू डू दैट? सर याद रखने का तो सर आई थिंक इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किसको कितना याद रहता है, नहीं रहता है. बट वन थिंग आई डिड ना कि आपकी जैसे क्लास नोट्स होते हैं, आई मेक देम कंप्रेहेंसिवली, प्लस एंड ऑन द लास्ट ऑफ द मींस द क्लास नोट्स आई डिड ए सिनॉप्सिस सर, कि ये मेरे को लास्ट में हेल्प करेगा. तो वो सिनॉप्सिस मेरे को हेल्प करता है. उसके अलावा मतलब मैंने सेपरेट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, बिकॉज सर वन थिंग ना कि आई डिड ए ब्लेंडर इन बिटवीन. I appeared for the Rajasthan Judicial Service, na Rajasthan Judicial Service, and you said ओके. कि बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं मत जाना, and I went sir, and मतलब धक्का लगा. It was a kind of setback. I failed to means qualify the pre sir ना. Though means it was means I left by 2 marks, but it was a big setback. तो then I realized कि नहीं, अनिल सर जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करो, ज्यादा मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है. तो फिर मैंने वापस ट्रैक पकड़ा सर. फिर मैं आया, फिर मैंने वापस रैंडम क्लासेस की. तो इन बिटवीन मैंने जो 1.5 मतलब मंथ्स मतलब काइंड ऑफ वेस्टेज तो नहीं बोलूंगा, बट यूजफुल नहीं रहा सर. तो दैट्स आई रिग्रेट सर. अगर मतलब इफ अगर सिलेक्शन नहीं आता इस बार ना, तो आई वुड हैव बीन आई थिंक बहुत रिग्रेटफुल होता कि मतलब वो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया. क्योंकि मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के आप जा रहे हो, मतलब प्रिपरेशन है नहीं, हाफ प्रिपरेशन है, वो मतलब मुंह की खानी पड़ जाती है सर वहां पे. तो दैट वाज दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन आई फेस सर. तो I उड़ीसा में yeah, please go ahead. तो उड़ीसा में सर जब मतलब एग्जाम हुए थे, जून में हुए थे सर, जून फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट हुए थे मेंस के. तब तक आई थिंक 80 to 90% ऑफ योर सिलेबस वाज कंप्लीट, एंड दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल सर. ओके. रिमेम्बर जब हम शुरू में ही आए तो मुझे बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, जी और सर. बच्चे कहते हैं कि सर 2 महीने में एग्जाम आ रहा है. तो जी सर. एवरी टाइम यू रिमेम्बर आई टू टेल यू कि नहीं अपियर होना, बिल्कुल आपको सर. जी वैसे सर. अपियर होना है तो हो जाओ.
बट जी सर। जैसे मैं यू यूज माय टर्मिनोलॉजी ओनली, कि जब तक आपके अस्त्र शस्त्र तैयार नहीं है तब तक बिल्कुल आप बिल्कुल। लड़ाई कैसे लड़ोगे? और फिर जब जब आपकी तैयारी नहीं है और आप बाई चांस सिलेक्ट नहीं होते, दैट इज अ टाइम यू गेट वेरी डिमोरलाइज्ड राइट सर। फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स। राइट और सर। मैंने ये बहुत बार देखा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जैसे आज मेरे स्टूडेंट बना, महीने में कोई एग्जाम आ गया वो अपीयर हो जाते हैं, यस सर। उसमें वो नेचुरली नहीं निकल पाते क्योंकि तैयारी उतनी नहीं हुई होती। फिर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि सर हम तो जुडिशरी कर ही नहीं सकते। यस सर। मैं तो पहले से कहता हूँ कि पहले पूरा 13 मंथ्स का मेरा सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि हम तो जी एक सर। भी नहीं करते हैं। यू नो वी यस सर। हैव वी हैव अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे ऑफ गोइंग आउट। यस सर। एंड उसके बाद 3 महीने अपना सेल्फ प्रेपरेशन रिवीजन करो। यस सर। अच्छा, आपने रिवीजन कैसे किया? व्हाट वाज द मोड ऑफ रिवीजन? सर, वन थिंग कि क्लास नोट से मैं सिनॉप्सिस को देख के करता था। एंड सेकंड थिंग कि सर मींस आपके वीडियो लेक्चर में मतलब स्पीड अप करके देखता था 1.5x 1.75x पे स्पीड अप करके देखता था। लाइक कि आपका जैसे लिमिटेशन आपने करवाया था तो नियर अराउंड 30 लेक्चर्स वर देयर। तो 30 लेक्चर्स को सर मैंने 2 बार देख लिया। तो इट वाज काइंड ऑफ ए सॉलिड थिंग, तो बढ़िया लगा वो कि चलो अब ये सेट है। तो वैसे मैं रिवीजन वैसे ही करता था सर, मतलब इसको 2x कर लिया, फिर क्लास नोट से अपना एक अलग कॉपी लेके राइटिंग करता था सर। आई यूज्ड टू डू ए लॉट ऑफ राइटिंग सर। एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड वे यू हैव टोल्ड, क्योंकि ये एडवांटेज सिर्फ ऑनलाइन में है यस सर। कि आप एक ही लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, तो एक बिल्कुल तरह से बिल्कुल। जल्दी रिवीजन हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर यू कैन रिवाइज इन मे बी हाफ एन आवर और मे यस बी सर। इन 20 minutes. यस सर। So that is another very good way of revision. And plus you can have your notes in front of you. तो यस वो सर। एक विजुअल भी आ रहा है और साथ साथ आपके अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स भी हैं, दोनों इकट्ठे आप पढ़ते हैं, तो इट दोनों मेक्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं बिल्कुल सर। यस सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है दोनों का सर। दैट सिंक्रोनाइजेशन बिकम्स वेरी इफेक्टिव, कि वो चीज याद रह जाती है हमेशा के लिए। बिल्कुल। यस सर। यस सर। ओके। एंड व्हेन आर योर, आई थिंक अब आपका पहले तो यू विल हैव योर मेडिकल एंड देन यस योर सर। मेडिकल। वेरिफिकेशन होगा आपका। यस सर। Okay. So I'm very. Were you practicing earlier? No sir, means I passed out in 2021, means October, and अच्छा. the notifications comes right in the December, mid December, and I appeared for the prelims in the February, and in the June it was. So I mean I'm the fresher sir. It was my Okay. first So attempt that's sir. wonderful. That means right after LLB, you have immediately appeared, Yes. and Yes there sir. you are. So Yes I'm sir. at least satisfied and very. I'm happy that at least our training for judicial services is now proving effective also on online students. And Yes. I definitely must congratulate Unacademy for holding a very comprehensive way. And because now a lot of new things are being added day by day, Yes sir. because Yes sir. now that they have tasted success. In fact, in Haryana, about 40 plus students of mine had cleared, Yes sir. and the first position was mine, second was mine, fourth was mine, so many. And even Amrit ma'am has become a judge now. Yes sir. So Yes sir. I think sir, this. more. Yes sir. Yes, please go ahead. Yes, sir, I think means this time there was some mistakes means I from the Odisha students, but I think I'm sure that next week definitely you will get a lot of students from the Odisha. Madhvi Didi is there, Dharitri Didi, Jayashree. These are means there are much brilliant students, sir. I think Yeah, I don't know where it's, the mistakes happen, but they will surely clear. competition is such a thing that somewhere small mistake can Yes, sir. throw you out of the whole competition. Yes, sir. We I can't know afford a small mistake in this competition, sir. I have about 10, 12 students from Odisha who Yes, sir. I'm dead sure will are going to become judges in the next lot, Yes, sir. because they are brilliant. The names you have just named, most of them I've started Yes, knowing sir. them personally, Yes, sir. and they Yes, are sir. all brilliant. And definitely in the next lot they are going to be in the first 5 positions, because Sure, they surely, are sir. working hard. So I think on behalf of an academy, I congratulate you, and of course on my behalf also. It is a very proud privilege for a teacher and an academy that success at last comes to the, because it is a hard work on both, on the Yes, sides sir. of both but the student as well as the teacher. Yes, And sir. जब हमारा दोनों का हार्ड वर्क सिंक्रोनाइज करके जब सक्सेस में आता है,
So Yes, that sir. is a big, morale booster for both the teacher and the student. And Yes, plus sir. the students who are following the courses. Yes, sir. Because आपकी सक्सेस जो है वो सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं है, वो जी सर. सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक 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 ड्रीम कम ट्रू है. Yes, sir. Now all of them are very motivated. In fact, today's group was full of congratulations for you. Yes, sir. Means I am not able to reply, sir. Means yesterday night I slept at 12, and in the morning I woke up by 4 o'clock, and I am just replying, thank you, thank you, thank you. But still a lot to cover, sir. And sir, नहीं, means it's my pleasure to have you on this journey. Means whole team, sir. Means I will personally message everyone, sir. That no, means the whole teams were amazing, just amazing, I must say, sir. थैंक यू बेटा. इनफैक्ट वी आर हमारी भी कोशिश ये है बेटा कि मैक्सिमम, बिकॉज नाउ slowly every student in India now, Yes, sir. since they have access on an academy to me and my team, Yes, so sir. what happens is that everybody now has dreams. And people like you, they are like a morale booster for them, that okay, we can also do it. Yes, sir. So No, sir, you are. I can assure you, sir. I think if a student follow your guidance for 1 year continuously, rigorously, without any मतलब किसी भी मतलब बिना हिचकिचाहट के अगर आप आपका 1 साल कंप्लीट कर ले, आई थिंक नो वन विल स्टॉप हिम, सर. 1 year, I must say, sir. मतलब 1 year, I think more than sufficient. If he sincerely complete 1 year with you, it's going to be blockbuster, sir. No, no, thank you, beta. And in fact, I'm very proud of one another thing, that tomorrow when you sit as a judge, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता. Yes, sir. आपकी, because it's not only knowledge of law to crack judiciary. Tomorrow when you become a judge, it is this deep knowledge of law which will help you in writing the best judgments. Yes, sir. और आप किसी के आप मतलब ये नहीं होगा कि कोई वकील साहब आ गए और आप कुछ बोल रहे हो, आप कहते हो ये तो मुझे आता नहीं, चलो चुपचाप करके सुनते जाओ. जी सर. Now जी you सर. can, when you know your law, then even those who appear before a judge are very careful. They come prepared. ये Yes, sir. सारी चीजें, because all these things I am saying because all these feedbacks are given to me by my students who have become judges. कि सर सिर्फ हमें जज बनने में ही नॉलेज की काम नहीं आया, सिर्फ जज बनने के बाद हमारे Yes, को sir. ज्यादा काम आ रहा है वो नॉलेज. Yes, sir. Yes, sir, एनीवेज बेटा. you not I think you not only impart the knowledge of the law, but side by side you also develop a person says how to become a judge, actual judge. How you going to succeed in the journey of a judge? That's the important factor, sir. See beta, my job is not only to give you what is called bookish knowledge. Yes, sir. I always used to tell you, I'll train you how to think like a judge, Yes, sir. how Yes, to sir. behave like a judge. Yes, sir. So this is what is important, because when you start thinking and behaving like a judge, then your entire journey becomes perfect. Yes, sir. So beta, many congratulations Thank you so from much, sir. Academy and I. We both of us, we all wish you a very glorious career in your future, and may you always do outstandingly well. God bless you always. My Thank you so blessings, much, sir. Thank you so much. Thank you so much to Unacademy and you. my Thank blessings you. will always be there with you, beta. Sir, God you bless have to be with me always, sir. you. I'm always there with you. I'm there with every student of mine. Yes, sir. God Thank you, bless you. sir. God Thank you bless so you. much, sir. Thank you so much, sir. Unacademy. Let's crack it.